तो राधा माँ कह रहे हैं कि एक तो पहली बात कि उनको ये लग रहा है कि मैंने कई पुण्य किए हैं, कई जन्मों के पुण्य हैं कि यहाँ पर उपस्थित है और गुरु जी के शिष्य बने और अब जो है कि कुछ 4-5 वर्षों से ये दोनों ही भगवद गीता को सुनने में, सीखने में तथा उसको सिखाने में लग गए हैं। कहते हैं कि कहीं उन्होंने कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, किंतु स्वामी गणपति सच्चिदानंद जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने उनको ये कैसे भगवद गीता का चैंटिंग करना है, ये सिखाया और उसके पश्चात अब जो है, वो कई सारे स्वामियों को सुनते रहते हैं कि कैसे ये बोलते हैं वगैरह और भगवद गीता का अभ्यास करते-करते अचानक से उनको कहीं तो गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसे लगता है कि कहीं तो गुरुजी उनके साथ हैं। तो वो ये उन्होंने थोड़ा कहा, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो सब लोग कि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा विस्तार से कहूँ तो कृपया बोल देना, किंतु उनको सुनना ज़्यादा महत्व का है। केतन भाई, you may let me know, please. Yes. Thank you, Samir ji. Yes, please go on, ma. Yeah. Thank you. I forgot to mention one important person who... Just a minute, sorry to interrupt, Amma. Ketan ji, can we please spotlight them? Yeah. I forgot to mention two very important people who have inspired me very deeply to go deeper. The first person who encouraged me to take up the challenge and said, okay, you can do it, Radhama, was Rajan Bide. He gives Bhagavad-Gita sessions too. And he said, you do it, you can do it. And he does it a different way. But the way I'm doing, another inspiration was Guruji's master, Maharishi Mahesh Yogi. His books are amazing. That just completely captured my attention. There I could see a lot of SSY and Chinmayananda, these two, and Prabhupada in some places. These three people mainly helped me understand a lot, especially in comparison, how to connect SSY to Bhagavad Gita. So, yes. Samir, you want to finish this? Okay, as you say, stop, I will start. Yes. राधा कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बड़ा महत्व का है और जिनका नाम वो लेना चाहते हैं, जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली कि हाँ मैं कर सकती हूँ, या कहीं ना कहीं उनसे वो प्रोत्साहन मिला, उन्होंने उनको थोड़ा सा धक्का दिया कि या आप कर सकते हैं, वो है हमारे राजन जी। और भगवद गीता का कहीं ना कहीं सीखने और प्रचार करने में जिनका योगदान रहा या जिनका प्रभाव रहा, तो राधा माँ कह रहे हैं, पहले तो महर्षि महेश योगी, दूसरे हैं स्वामी चिन्मयानंदा और तीसरे हैं हमारे प्रभुपादा इस्कॉन के। तो इन्होंने जो लिखा है, ये विवरण दिया है भगवद गीता का, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। Yes, Radha माँ। Thank you. So I'm going to say a small dhyana shlokas, two of them. It's always good to start with prayer. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Gita Dhyana Shlokaha. Om Pathaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Kratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrutavarshini
Bhagavati Ashtadashaadhyayini Amba Tvamanusandadhami Bhagavad-Gite Bhavatveshini Prapanna Parijataya Totra Vetraikapanaye Jnana Mudraya Krishnaya Gita Amritaduhe Namaha. Harihi Om. Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om. Okay. So these dhyana shlokas, the first dhyana shlokas were supposed to have been, many believe that they were written by Vyasa himself. He calls Bhagavad-Gita as the mother. It is the mother who teaches us how to go about living our life. And so Vyasa himself mentions Bhagavad-Gita is the mother I bow down to the divine verses. So the central teaching of Gita is reality of God. Central teaching of SSY is reality of God within us. That is the first comparison. Bhagavad-Gita is the most unusual, many-faceted scripture. It is for all people from any country, any profession, any religion, any color. By nature, they can be in any guna. And all of them can be lifted. Because Krishna says, Sarva dharman parityecha mamekam charanam vraja. The minute you come here, you are under my care. And that is exactly what we do in SSY. We let everybody come. We say everybody can be a guru for every street. That is the comparison. राधा कह रहे हैं कि जो ध्यान श्लोक का उन्होंने बोला, मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप में से कोई ये ध्यान श्लोक का मुझसे नहीं सुनना पसंद करेगा। तो ये जो ध्यान श्लोक का बोला है वो व्यास मुनि उन्होंने स्वयं ने ये रचिता है और कहा है। ये जिसका कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु क्या है भगवद गीता का, तो वो है कि हम स्वयं ईश्वर को जाने। और SSY का केंद्र बिंदु क्या है, तो वो भी वही है। तो राधा कह रहे हैं कि पहला अगर मैं कुछ साम्य कहूँ दोनों में, गीता में तथा SSY में, तो वही है कि हम ईश्वर का स्वरूप जानते हैं। भगवद गीता सबके लिए है, चाहे कोई धर्म, कोई जाति या कोई गुणों में, जो कोई भी गुण में है, उन सब का उत्थान होना, यही भगवद गीता का उद्देश्य है। Yes. So, Bhagavad Gita, see, you go to buy anything, it comes with a manual. Even a small child's toy these days, you need a manual. We are born without a manual. Our manual was our mother first. So from there we have picked up. And Bhagavad Gita is a very divine manual and SSY is a manual. Bhagavad Gita became a manual 5,000 years ago. And every generation, some people have studied it and commented and taught people around them. It has survived through generations and generations and generations. And we should make sure that SSY is a manual for Bhagavad Gita. We should take this. Manual for Bhagavad Gita, no. Yeah. Okay. So we should take this in such a way, it is a sacred. We have to bow down
and make sure that this reaches several generations to come. राधा माँ कह रहे हैं कि आज की तारीख में छोटी सी छोटी वस्तु जैसे कि कोई बच्चे का कोई खिलौना, उसके साथ भी एक मैनुअल आता है जहाँ पर लिखा रहता है कि इस खिलौने का प्रयोग कैसे करना है, उसको कैसे चलाना है। तो जीवन के बारे में क्या है? तो राधा माँ कह रहे हैं कि भगवद गीता ये जीने का मैनुअल है, ये जीवन जीने का मैनुअल है। किंतु एसएसवाई जो है वो भगवद गीता का मैनुअल है। तो जैसे मैं समझ रहा हूँ कि भगवद गीता को अगर समझना है तो एसएसवाई से रास्ता सहज हो जाता है। और ये जो मैनुअल है, ये बड़ा ही सेक्रेड है, मतलब पूजनीय है। तो इसे हमें बहुत आदर से, बहुत सम्मान से, बहुत श्रद्धा से इसे देखना है, रखना है, ताकि ये आने वाली कई पीढ़ियों के लिए काम आने वाला है। So, right at the outset, I would like to let you all know that I am a student and will always be a student of everything that I have been sharing with the world. It is the inner excitement and enthusiasm that I feel that humbles me every time I share my knowledge of SSY and Bhagavad-Gita. When I study that, I remember always that I'm always at the beginning of the path, not 40 years experience or anything, or that I'm so many years old. I'm always starting a new journey, new beginning. I'm at the footstep. पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और जितना मैं ये सीख रही हूँ, जितना मैं ये पढ़ रही हूँ, बारी-बारी बड़ी कृतज्ञता से वो एक अनुभव कर रही हूँ कि हाँ, मैं तो अभी सीख रही हूँ, हम सभी लोग सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे 40 वर्षों का अनुभव है कि मैं कुछ पढ़ूँ और मैंने सीखा है और मैं सिखाऊँ, नहीं, मैं एक विद्यार्थी ही हूँ। So let us see how Bhagavad-Gita starts. The first chapter is called Yoga, Arjuna's Yoga of Dejection. So let us see how we introduce SSY right at the introduction. Here, Guruji gently, in a fun way, makes us probe into our own life of dejection, where we hide behind the truth, searching for happiness everywhere. That's the beginning. And what needs to happen for us to be happy, and how we postpone happiness. And we are hiding behind, oh, my life is gorgeous, while we are miserable. We are all in a life of dejection. When we entered SSY, we hide behind the truth. I'm okay. I have to work. I have to do this. I have to do that. Just hiding behind so many must do, to do, how to be. So here, Krishna is prodding Arjuna, and he, who has come, who is the world's best warrior, best trained warrior, is brought to face the challenge of facing Bhishma and Drona, his own grandfather and teacher. It is like if a trained police officer, criminal investigation, he has been trained thoroughly and given the power. He is the major general or something like that, criminal investigation. And he goes, finds the sieges, a mafia gang, and finds his own uncles and aunts and his own cousins, everybody in the mafia. What is he supposed to do? Is he supposed to go and arrest them or run away? Oh my God, these are all my people I grew up with. They have done this for me or that for me. So
That is the situation when Arjuna wants to run away and take sannyas. He says now suddenly he wants to take a monkhood and go away from the scene. Would we allow a criminal investigator today who goes to arrest a corruption or a drug deal, find his own children or cousins there, to run away from the scene? We are all caught up in such situations. And that is where we begin. We are running away. Guruji says, catch up. Right now, come. Go ahead, Sabir. So, भगवद गीता की शुरुआत कहाँ होती है? तो पहले ही चैप्टर में दिखता है कि अर्जुन जो है वो एक बड़ा योद्धा है और वो कहीं ना कहीं अटक गया है, भ्रमित हो गया है। और SSY की शुरुआत कहाँ होती है? तो वो भी वहीं से होती है कि हम भी कहीं ना कहीं अटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। हमें अपने जीवन में बहुत कुछ इसी प्रकार का अनुभव होता है कि ये मुझे करना पड़ रहा है, ये मुझे इससे तो मेरा चलेगा ही नहीं, इसके बगैर तो चलेगा ही नहीं। तो जिसको कहते हैं कि ये मुझे करना पड़ रहा है, तो वो कैसी है? तो एक उदाहरण दे रहे राधा माँ कि जैसे कि कोई एक योद्धा है, वो उसको प्रशिक्षित करके, उसको तैयार करके अब भेज दिया है। जैसे कि कोई पुलिसकर्मी है, कोई इंस्पेक्टर है, तो अभी तैयार हो गया और उसको अभी छोड़ दिया है कि चलो अब तुमको काम शुरू करना है, आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया। और वो अचानक से किसी को पकड़ता है और देखता है कि वो जो पकड़े गए चोर है या लुटेरे हैं या कोई ड्रग्स में है, और ऐसे लोग जिनको वो पकड़ा है वो स्वयं उसके कोई नाते संबंधी है या तो फिर उसके बच्चे ही है। अब उसने क्या करना? अब उसने पकड़ना या फिर भाग जाना। तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर हम ऐसे दुविधा में हो जाते हैं कि मैं इसको करूं या नहीं करूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने हैं, तो मैं सत्य को पकड़ूं या नहीं पकड़ूं, अपना दायित्व संभालूं या नहीं करूं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं संसार को छोड़ दूं, मैं संन्यास ले लूं। तो ऐसी दुविधा में अर्जुन भी था। ये समा कृतिका माँ, इज इट गोइंग ओके? Somebody please, if you can tell me, and you may please add on if I am leaving anything. I think you are doing a good job. I kind of 50% I can follow what you're saying. And Ela is there, so I'm sure Ela will also catch you. Okay. So Ela, Meena, Jayashree, they're all there. So yeah, they all may please add on if I miss on anything. So we too are caught up and do not realize that we are hiding behind the identities of somebodyness. Okay. Just like Arjuna was hiding my grandfather, my guru, I'm a student, all those things. We all have so many layers of somebodyness that with excuses and we limit our potentials. Oh, how can I be? I can only be this much because I'm only this person. So we are also people who need to surrender that somebodyness. Arjuna shakes and his Gandivam falls from his hands. And he becomes completely shaken up. And when in that stage, Krishna is able to deliver the message to him, bring him back. And that is what, in the introduction, Guruji brings us to that state. Yes, I need to hear this. This is a truth about me. Yes, I am powerful. I want to hear this more.
तो हम सभी इस दुविधा में से जा रहे हैं, ऐसे भ्रम में जी रहे हैं, और ये सभी दुविधा या भ्रम, इसके पीछे का कारण क्या है? तो हमारा समबड़ीनेस हम सभी जानते हैं क्या है, कि मैं कोई हूँ। तो ये सभी दुविधा या असत्य या भ्रम, इसके पीछे ये हमारा समबड़ीनेस है, कि इसी कारण मैं अपने आप को सीमित पा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। और जब तक कि ये समबड़ीनेस कहीं न कहीं शरण नहीं होता है, शरणागत नहीं होता है, तब तक हम अपने क्षमता को नहीं जान पाएँगे। और यहीं पर श्री कृष्ण की एंट्री होती है, कि श्री कृष्ण भी अर्जुन को इसी समबड़ीनेस को कैसे शरण कर दें, यही सिखाते हैं। और एसएसवाई में गुरुजी भी हमको यही देते हैं शुरुआत में, कि कहीं न कहीं हम शरणागत हो जाते हैं और हमें ये समझ में आता है कि नहीं, ये मैंने सुनना है, ये मेरे लिए है। कहीं न कहीं मैं इससे ये जानकर उभर सकता हूँ। So again, SSY introduces us to the principle of how our likes and dislikes are associated with our somebodyness. It is the identity of belonging to a political party that can make us like or dislike somebody. It is the identity of I'm an engineer, I'm a coolie, I'm worker, that decides what clothes we are going to wear. Same way, in chapter 1, Dhritarashtra is asking, have Pandavas, because of their affection, attachment to Drona and Bhishma, have they forgiven Duryodhana? That is how he is asking Sanjay. He was within himself believing that Arjuna will fall apart. तो एसएसवाई में जैसे कि हमारी समबड़ीनेस की पहचान होती है, और समबड़ीनेस क्या है या समबड़ीनेस क्या देता है, तो हमेशा ये पसंद है, ये नापसंद है। तो पसंद नापसंद के ही चलते हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, ये सब पसंद नापसंद से ही आ रहा है। और ये पसंद नापसंद से उभरना, यही हमें मिलता है। तो वैसे ही भगवद गीता में पहले ही इसमें धृतराष्ट्र जो है, वो संजय को पूछते हैं कि क्या अर्जुन भूल गए हैं कि उन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा है, द्रोणाचार्य से क्या सीखा है। तो कहीं न कहीं धृतराष्ट्र की अपेक्षा थी कि ये देख कि क्या मेरे सामने मेरे गुरु ही है, ये देख कहीं न कहीं अर्जुन ये जो बैटलफील्ड है, ये जो युद्ध भूमि है, ये छोड़ देगा। So there are several shlokas where Krishna describes the state of samadhi. More than 70 times in Bhagavad-Gita, that means out of 700 shlokas, more than 10% of the shlokas have samadhi in it. And that's what Siddha Samadhi Yoga. How to decipher that and bring it forth, that is what is the essence of Bhagavad-Gita. भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, और 700 श्लोकों में से 70 से अधिक श्लोकों में समाधि आ गई है। समाधि का कहीं न कहीं वहां पर हमें दिखता है कि बोला गया है। और एसएसवाई में भी समाधि, सिद्ध समाधि योग, मतलब पूरा का पूरा भगवद गीता या फिर एसएसवाई, ये क्या देता है? तो समाधि देता है। So this is a knowledge that comes in parampara. It is a transcendental knowledge. It comes from the blessing. In 4th chapter, 34th shloka to 42, Krishna describes how to receive the knowledge from a parampara of a teacher. Tadvidhi pranipathena. So
that is just to try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart the knowledge unto you because they have seen the truth. So each SSY teacher, Guruji empowers. It's such a special being because you are a representative. Not only you are the link between that Aham Brahmasmin and this individual soul. It's a very, very special relationship you are establishing, just like that of Krishna and Arjuna. ये जो ज्ञान है ये परंपरा से आया है, तो गुरु शिष्य परंपरा या गुरु परंपरा से आया है, जहां पर चौथे अध्याय में 34 से लेकर 42 श्लोक जो है वो इसी के बारे में है कि ये ज्ञान कैसे आया है और कैसे लिया जाता है। तो एसएसवाई में भी यही है, गुरुजी भी यही कहते हैं कि ये गुरु परंपरा है, ये कोई किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक की खोज नहीं है, किंतु हर व्यक्ति, हर गुरु मैंने इसमें से क्या जाना, क्या अनुभव किया, यही आगे देते रहता है। तो राधा माँ कह रहे हैं कि हर एक एसएसवाई शिक्षक भी क्या है, तो वो वही देते रहता है जो उसने अनुभव किया है, जो उसने जाना है, वो आगे देते रहता है। So when things are there are three things: proper humility, submissive questions, and service. These are the three qualities that we need to receive the knowledge in us. तो तीन बातें हैं जो आवश्यक है। तो एक है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, या क्या कहे हिंदी में, नम्रता। नम्रता, हाँ जी। तो एक है नम्रता, दूसरा है कि मेरे जो प्रश्न है वो कहाँ से आ रहे हैं मेरे प्रश्न, और तीसरा है सेवा। तो ये तीन बातें हैं जो आवश्यक है। So our entire rules class is based on the relationship Arjuna established in serving Krishna to receive the knowledge. Rules class comes hard because the knowledge that we are getting, for that we need to bring that bhava of Arjuna in us. Notice another thing here, very key point. The Yudhishthira was a whole knower of all dharma, and Bhima was the strongest among all. But none of them, nor Karna or Duryodhana, they had other qualities. But even these two who were such strongholders, who also had love for Krishna, they did not come to that point of Arjuna to be able to receive. And that is what we bring forth through our rules class in SSY. तो पहले तो पूरा भगवद गीता में जो कृष्ण और अर्जुन का नाता है, तो राधा माँ कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि अर्जुन को उस बिंदु पर लाना कि वो पूरी तरह से तैयार हो जाए इस ज्ञान को लेने को, तो इसकी तैयारी होती है। तो युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज कहा गया, मतलब पूरा ज्ञानी है, भीम जो बहुबली है, या फिर कर्ण है या और कोई है, इनमें से कोई भी गीता को लेने के लिए तैयार न था, मतलब उसकी तैयारी न थी। सिर्फ एक अर्जुन ही है, तो उसको तैयार करने में और फिर उसको ये ज्ञान भगवद गीता देने, तो पहली तैयारी हो जाती है कि तुम लेने के लिए क्या सक्षम हो, तैयार हो। उसी तरह से एसएसवाई का रूल्स क्लास जो है, तो पूरा का पूरा रूल्स क्लास जो है
नियम जहां पर हम बताते हैं दूसरे ही दिन, तो वो बड़ा कठिन जाता है विद्यार्थी को लेने में। शुरुआत में तो अंदर ही अंदर बड़ी खलबली हो जाती है, किंतु अंततः वो विद्यार्थी सही में विद्यार्थी मतलब पूरी विद्या को ग्रहण करने के लिए सक्षम या तैयार या नम्र हो जाता है। तो यही जो भगवद गीता में अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने किए, यही SSY में गुरुजी उस विद्यार्थी के लिए करते हैं, कि उसको तैयार करते हैं कि विद्या ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाओ, तैयार हो जाओ, नम्र हो जाओ। So the rules class is all about emptying, becoming totally empty to receive the knowledge. It is SSY is a nectar of Bhagavad-Gita. It is about becoming completely open with humility, enthusiasm to learning, eagerness. Every time there is an interactive question by Arjuna, all that is woven into the rules class, how Arjuna receives it. This is the basis for our rules class. तो SSY के नियम जो है वो काहे का आधार हो जाता है, तो वो विद्यार्थी पहले पूरी तरह से खाली हो जाता है। जो अंदर भरा हुआ है, जो वो लेके आया है, पहले जो भी संस्कार लेके आए हैं, तो उसको पहले खाली करना है, तो वो और विद्या ग्रहण करने के लिए तैयार या सक्षम हो जाता है। तो राधा माँ कह रहे हैं कि SSY क्या है, वो भगवद गीता की निचोड़ है, वो अमृत है। तो ये अमृत लेने के लिए तैयार होना, और SSY जैसे भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, वैसे ही SSY का आगे जो है वो संवाद है, वो लेने के लिए तैयार होना, ये आधार है। See, you cannot, this is not like going and learning mathematics or physics. I pay you, you shall teach. You shall teach what I tell you to teach. Here, the relationship is opening the mind and allowing it, seeing it blossom with that nectar. When you are receiving, when we are receiving that divine knowledge, it is a blessing. And we have to be coming from a totally unpolluted mind with nothing there. It has to be clean. भगवद गीता को लेना ये कोई गणित की शिक्षा है या कोई फिजिक्स की क्लास है, ऐसे नहीं है कि जहां पर मैं कुछ पैसे दे दूं और मैं कुछ सीख जाऊं। तो ये एक अमृत है, तो ये अमृत लेने के लिए तैयार होना, ये बहुत आवश्यक है कि हम उसे ग्रहण करने के लिए, उसको लेने के लिए तैयार हो जाए। तो हमारी तैयारी हो, इसके लिए बहुत ज्यादा काम किया है गुरुजी ने ये नियमों के क्लास में। So then let us move to another class, food class. They are again confirmed through shlokas in 6th chapter 16 and 17 as definite conditions necessary for attaining and maintaining the state of samadhi, equanimity in us, or sthita prajna. So the marvel here is that all those things that come with the difficult words must be, should be, we have it in a delicious platter given to us as with delicious SSY food. फिर आगे बढ़ते हैं, ये नियमों का क्लास हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, वो है खान पान के बारे में। तो वहां पर भी राधा माँ कह रहे हैं कि वहां पर भी जो है वो समत्व या स्थित प्रज्ञा, ये आने के लिए, इस स्थिति को लाने के लिए भी हमें गुरुजी ने वही दिया है कि कैसे हम इस समत्व में पहुंचे। So there is another, if you take chapter 7, 11th shloka, balam balavatam chaham kamaraga vivarjitam, he says, and in the strong
I am the strength that is free from desire and attachment. In all beings, I am the desire that is not opposed to dharma, O foremost, the clan of Bharata. That is, Krishna is asking him to recognize him in all forms. I'm the strong, in the strong people, I am the strength. Every strength is Bhagavan, he says. And it is not influenced by desire or attachments. It is pure. It is not influenced by adharmic things. I'm the energy that is not created artificially. Just explain this, then I'm going to connect this. तो राधा माँ कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि कैसे ये इच्छा या आकांक्षा से परे है, तो ये समझाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर बलशाली में बल जो है वो मैं हूं, और यही बल हमें अधर्म से रोकता है, धर्म के समीप लेके जाता है। जहां पर मैं इच्छाओं आकांक्षाओं में अटक कर कुछ अधर्म ना करूं। Is this okay, Kritima Kama, Latikama? Yeah, sounds good. Sounds good. So here Krishna says, I can only enter the pure, I can give the nectar, rather. I can be the strength in the pure. So just imagine you go to Olympics, you want to win, and somebody, you take steroids and all those boosters, and you will be thrown out. That is the same. If you want the divine nectar that is genuine, we need to remove all impurities from us. We need to detox ourselves. You see how Guruji has, SSY gives us a pure body, a clean body to be able to receive that strength. तो ये अमृत लेने के लिए सक्षम होना या तैयार होना, इसका अर्थ ही यह है कि मैं निरोगी रहूं, कोई रोग से दूर रहूं, और केवल रोग ही नहीं तो कहीं ना कहीं अगर मुझ में कोई, मेरे शरीर में कोई इम्प्योरिटी है, मतलब क्या कह सकते हैं इम्प्योरिटी को? अशुद्धि। हाँ, कोई अशुद्धि है तो वो निकल जानी चाहिए। जब तक कि अशुद्धि नहीं है, जब तक कि कोई शरीर में जो कोई अगर रोग है, तो मैं ये अमृत लेने के लिए तैयार ना होगा। तो यही बात गुरुजी ने भी हमें SSY में बहुत ही सहज तरीके से दी है कि कैसे गुरुजी ये महत्व बताते हैं कि हमें अपने शरीर को बहुत शुद्ध रखना है, क्योंकि जब तक कि ये शरीर शुद्ध ना हो, ये अमृत लेने के लिए सक्षम ना होगा। जैसे कोई स्पर्धा में कोई व्यक्ति जाता है, तो वो अगर अपना बल बढ़ाने के लिए कोई ड्रग्स लेता है, वो लेता है, तो नहीं चलता है, उसको बाहर किया जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर को भी पहले शुद्ध करने के लिए गुरुजी सब देते हैं कि पहले इसको शुद्ध करो, इसीलिए अमृत आहार दिया गया, बोला गया। So every angle of SSY has a root from Bhagavad-Gita. Same, some of them I'm not going to dwell in deeply, but Pranamaya Kosha Suddhi also is specified in Gita, and Guruji and SSY, through SSY, has blessed us with such, how to bring the pure prana, that strength of Krishna into us through Pranamaya Kosha. तो ये ऐसे भगवद गीता का हर एक बिंदु, हर एक अंश जो है वो SSY में आ गया है। तो राधा कह रहे हैं हर एक बिंदु में, हर एक पॉइंट पर तो इतनी गहराई से नहीं उतर सकते हैं, किंतु वो बता रहे हैं कि जैसे अन्नमय कोश का है, वैसे ही प्राणमय कोश का भी है, कि कैसे हमें प्राण शक्ति जो है वो ठूस दी जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें प्राण जागृत हो रहा है।
So then again, I see through in chapter 6, it is scattered all over. I'll come to that. In chapter 16, rather 6, 16, 17, these shlokas go, I'll just go the meaning. For example, ordinarily, these are hard in today's lifestyle. It says, verily, yoga is not possible for one who eats too much, nor does he not eat, who sleeps too much, or who is unable to sleep. All this is balanced out in our food class, pranayam, all that we get that Shakti, pure Shakti. भगवद गीता के 16वें 17वें अध्याय में भी, उन श्लोकों में भी भगवान कृष्ण इस समत्व के बारे में बोलते हैं कि कोई बहुत ज्यादा खाता है या नहीं खाता है कुछ भी, तो वो नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल सो नहीं पाता है, वो भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं समत्व चाहिए। तो यही बात गुरुजी ने SSY में भी बोली है कि कैसे बैलेंस रखना है, समत्व रखना है। So again, let us go to chapter 2, shloka 14, 15, 16, 17. These are all explaining different reasons that our nature makes us sway away from our strength of truth, pure strength of truth, which is covered so beautifully. If you go sloka by sloka, we might think, oh, this is too hard. This is all possible only for monks living in monastery, somebody outside. But it has been all brought through SSY, how every moment this is possible for us. दूसरे अध्याय में भी कई सारे श्लोकों में राधा माँ कह रहे हैं कि वही बोला गया है कि कैसे हम अनजाने में अपने वर्तन से, धर्म से, सत्य से दूर चले गए हैं और फिर वो पुनः लौट आते हैं जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इन श्लोकों में। वैसे ही गुरुजी हमें जो दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं असत्य में, अधर्म में जी रहे हैं और हमें पता ही नहीं, अनजाने में हो रहा है। और जैसे आगे आगे बढ़ता है, पहले क्लास, दूसरा क्लास, वैसे वैसे हम धर्म तथा सत्य से पुनः एक बार परिचित हो जाते हैं नए तरीके से। So this is really SSY is proven again and again for grahasthas to raise from ordinary to extraordinary, to really go inwards to bring the diamond from inside us. That is how it has been structured. And so joyfully, so easily being at home with our dear and near ones. भगवान कृष्ण को सुनते सुनते कई बार अर्जुन को भी ये लगने लगा था कि यार क्या ये सब मेरे लिए है? मैं तो योद्धा हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मुझे तो ये सब ये बातें बहुत बड़ी ज्ञानी की बातें लगती हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं हमें भी लगता होगा कि जब हम सुनते हैं हमें लगता है कि नहीं ये तो कोई साधु सन्यासी के लिए ठीक होगा, मैं तो गृहस्थी हूँ, मुझे नहीं ये सब मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है। और फिर एक अमृत हमारे जीवन में आ जाता है SSY नाम का, जहां पर हमें ये सब सहज लगने लगता है और कहीं ना कहीं हम जो एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को पाते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, हमें असामान्य काम करने के लिए हम प्रोत्साहित हो जाते हैं, अपने आप को उतना हमें उतनी शक्ति का अनुभव करते हैं कि नहीं ये मैं भी कर सकता हूँ। So, like for example, shloka 14 in chapter 2, it says, O son of Kunti, the contact between senses and the sense objects gives rise to fleeting perceptions of happiness. So it talks about happiness in very abstract manner. And look at our SSY happiness class. It is happiness itself. Happiness is now. It is inevitability of the moment is just brought right in front of us. Eye-opener. Yes, I'm happy now, not later, not after I'm going to do something.
how you become happy in total non-doing. So, such a practical approach to the teaching. SSY के पहले अगर हमें कोई कहता कि हम बिना कारण के आनंद में रह सकते हैं, तो संभवतः हम उस पर विश्वास न करते। किंतु SSY क्लास में जो हमारा एक सेशन आता है हैप्पीनेस पर, जहां पर हम ये देखते हैं, हमें ये समझाया गया, सिखाया गया कि क्षण का स्वीकार, जो है सो है, तो अभी जो है वो है। तो राधा माँ कह रहे हैं कि ये कितना सरल है, ये कितना जीवन में उतारने जैसा है, जितना हमें संभव लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल प्रयोग में लाया जा सकता है। So again, between shloka 17 to 30, we see all the inevitability of the moment, being in the now, and responsibility, how responsibility brings power. So these have been made so joyfully, class by class, where we just, as if like we sit together and talk about it and see it, yes, this is the way I want to be. तो कि क्षण का स्वीकार है कि क्षण जैसे है वैसे है, वो अनिवार्य है। तो ये देखना या जिम्मेदारी का जो एक एहसास है कि मैं जिम्मेदार हूँ, ये ऐसे कई सेशंस जो है वो SSY में आते हैं, तो ऐसे लगता है, ऐसे नहीं है कि कहीं बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे, ऐसे लगता है कि हम सब लोग मिलकर बैठे हैं, चर्चा हो रही है, और धीरे धीरे मैं ये अनुभव करता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसी जागृत हो रही है शक्ति कि जहां पर मुझे लगता है कि हाँ, ये सब कुछ मेरे लिए है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। So it is brought once again as a friend, as a somebody who holds our hand. Yes, I can do it. It is an amazing walk that we take from the rules class to responsibility through leader follower happiness. So from in chapter 2, from almost 31st sloka on, there are various ways, Swadharma and Parodharma, leader follower is brought, explained. So many ways. The leading to Karmaniya Vadikarasya that Guruji quotes, and also Yogastha Kuru Karmani. All these are about leader follower. In such a fun way we bring forth. Yes, this is how I want to be. I don't want to be stuck-upness of a follower. Who wants to be a follower? Guruji infuses that in such a loving, friendly way through SSY. Leader follower, consequence of being a leader, happiness. तो राधा माँ कह रहे हैं कि SSY की पूरी बैच में, पूरी क्लास में जैसे नियमों से शुरुआत होती है कि पहले नियम, फिर जिम्मेदारी, फिर लीडर फॉलोअर, फिर हैप्पीनेस, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, ये जैसे है, तो ये हंसते खेलते आप सभी को अपनी क्लास अगर स्मरण हो रही है, तो क्लास में बड़ा मजा आ रहा होता है, सब लोग बड़े हंस रहे होते हैं, कभी दूसरों पर हंसते हैं, कभी स्वयं पर हंसते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसा समझा ही नहीं। और ये जब क्लास पूरी होती है, तब हमें अचानक से ये लगने लगता है कि सामने बैठा टीचर जो शिक्षक है, उसने कितनी सहजता से और एक मित्र के भांति हमें हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। तो वैसे ही भगवान कृष्ण जो है, वो अर्जुन को ऐसे हाथ पकड़कर, तो वहां पर ये राधा मान ने कहा, किंतु मुझे एकदम से स्मरण हुआ कि कई बार भगवान कृष्ण अर्जुन को मित्र कहकर बुलाते हैं, या भाई, मतलब ऐसा। तो ये ऐसे ही कहीं ना कहीं SSY शिक्षक जो है, वो भी हमें मित्र के भांति हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता है। So easy to understand the principle of Swadharma, Parodharma, and Karma Yoga in such a delicious manner.
And he also shows not only that the entire chapter 3 is on Karma Yoga, and it brings the awareness how Swadharma is very natural to us. Swadharma is like the God in us. We are invoking the God, that leadershipness with responsibility. And for that, now we can understand how the food, the sleep habit, all other habits we have, how conditioning to an openness, all that was necessary for us to reach this point. तो स्वधर्म तथा परमो धर्म, तो स्वधर्म कह रहे हैं कि स्वधर्म मतलब मैं, मेरा सत्य, मैं स्वयं हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो इस सत्य से अवगत होना, इस सत्य से परिचित होना, तो एसएसवाई क्लास में भी यही हो रहा है कि जिम्मेदारी का एहसास कि मैं जिम्मेदार हूं, या लीडरशिप, लीडर इस भूमिका से अपने व्यवहार होना, मैं जिम्मेदार हूं इस भूमिका में अपने व्यवहार करना। तो ये क्या है? तो ये वही है कि हम अपने ही सत्य से या अपने ही स्वधर्म से परिचित हो रहे हैं। See, when you are content, look at the state of our mind. That is yogastha kuru karmani, karma yoga. Okay, how we explain that in SSY. Work from contentment. By then we have already finished our samadhi meditation, and we have understood the desire, and then he takes us further into karma yoga. So that is where that yogastha kuru karmani and chapter 3 matters, all of them come up. In that context, what we are doing is, when every thought, every action comes from that pure intention, that pure fulfillment, that is Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate. You are whole. You are just giving from that whole into the world. That breaks away all our sins of past. When we can operate. So SSY takes you to that conscience where we can just put all our past behind. We become pure. Just we need to follow that SSY, what has been given. तो पहले नियम, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, फिर लीडर फॉलोअर, फिर हैप्पीनेस, और फिर ब्रह्मोपदेश दिया जाता है। तो जहां पर ब्रह्मोपदेश ये एक अनुभव हो जाता है उस समत्व का, उसके पश्चात इच्छा, आकांक्षा ये क्या है वो समझ में आता है, और फिर गुरुजी कर्मयोग के बारे में कहते हैं। तो मतलब ये सब होने के पश्चात कर्मयोग समझाते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। तो योगस्थः कुरु कर्माणि क्या कहते हैं गुरुजी? जहां पर योग आप स्थित हो और वहां से आप कर्म कर रहे हो, मतलब आप पूरी तरह से अपने आप में स्थिर हो जाते हो, समत्व में आ जाते हो, अपने आप में स्वयं को पूर्ण पाते हो, मतलब समाधान में आ जाते हो। ये सब समझाने के पश्चात गुरुजी ये बताते हैं कि यहां से जो आप कर्म होगा वो कर्मयोग कहलाएगा। मतलब कि गुरुजी कितनी सहजता से शास्त्रीय एक दृष्टि रखकर हमें यह सब केवल समझा नहीं रहे, अनुभव दे रहे हैं। तो पहले अपने आप को पूर्णत्व का, अपने आप को संपूर्ण होने का अनुभव कराना, और फिर वहां से कर्म को दिखाना कि यहां से आप जब कर्म करते हो तो वो कर्मयोग कहलाता है। यही बात कि जो उसके पहले का आपका जीवन था, वो सब जो कर्म थे, चाहे वो पाप है, चाहे वो पुण्य है, चाहे जो भी है, उसका पूरी तरह से कर्म का विमोचन हो जाता है, और उसके पश्चात आपका एक नया जीवन शुरू हो सकता है। So again, let's go to body class. It is also
reveals the impermanent nature, ever-changing nature of the body. How aham is eternal and all-pervading Paramatma. So shloka 16, 18, antavanta ime dehaha, all bodies have ending. Whatever we perceive with the 5 senses of perception and 5 senses of organ require mind. These are bound to change. Atma, the true inner self, is unchanging, absolute reality. This is again brought out so beautifully in body class. How were you when you were 5 years old? That changing, unchanging. How jovially we bring out that point. Were you 2 feet tall when you were 3 years old? And how tall are you now? Are you the same person? It is just inquiring, making us drop our mind, drop our all inhibitions. Actually, Radha, I'm feeling that you should keep on talking and we are listening to. In between, it's like, I myself am feeling, why am I breaking your flow? राधा माँ ये कह रहे हैं कि अब बढ़ते हैं, ये जो बॉडी क्लास है हमारी SSY की बैच में, जो बॉडी क्लास आती है, जहां पर हमें ये समझाया जाता है, 2 प्रश्न दिए जाते हैं कि क्या मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है। और इन प्रश्नों के साथ शुरुआत होती है उस क्लास की, जहां पर किसी को उठाया जाता है, बिठाया जाता है, पूछा जाता है कुछ और क्लास में सभी लोग जोर जोर से हंस रहे हैं और हंसते खेलते हम पहुंचते कहाँ हैं, तो इस सत्य की तरफ बढ़ते हैं कि दोनों ही वाक्य, मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, ये दोनों ही वाक्य सत्य है, दोनों ही वाक्य असत्य है। क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि ये शरीर जो है ये तो नश्वर है। क्या अमर है? तो जिसे मैं कहता हूं या अनुभव करता हूं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो आत्मा है ये अमर है, इसे ना तो जन्म है ना मृत्यु है। तो राधा माँ कह रहे हैं कि ये 1 घंटे 1.5 घंटे में गुरुजी ने हमें कैसे इस सत्य से भी परिचित करवाया, जो भगवद गीता के श्लोकों से संभवतः बहुत कठिन लगता है। तो ये सत्य को जानना या अनुभव करना भी कितना सहज और हंसते खेलते हो जाता है कि आत्मा अमर है, ये शरीर तो नश्वर है, आने वाला है, जाने वाला है, और कहीं ना कहीं हम हल्के हो जाते हैं। ये सब सुनकर, अनुभव कर ये हल्के हो जाते हैं। Then again, Samadhi, entire chapter 6 is on meditation. I don't want to go deep into the meditation because it's all there, so laid out so beautifully, that Aham Brahmasmin, the higher we rise in our consciousness, our vision is broadened and our desires just fall away. It is like when the desire is something keeps on coming when you are at lower, limited identity. When you have risen to Samadhi, it is like you can desire, you can take anything, everything is yours. How beautifully we come, everything is okay, and reaching into Samadhi, everything is yours. These topics automatically bring us to that abundance. फिर आते हैं ब्रह्मोपदेश, जहां पर हमें समाधि अभ्यास के लिए ब्रह्मोपदेश दिया जाता है या वो अनुभव दिया जाता है, जहां पर सब कुछ समत्व है, समतोल है, इक्वानिमिटी जिसको कहा जाता है। तो राधा माँ कह रहे हैं कि कैसे हमें समत्व में लाने के लिए ये दिया गया, जिसे हम मंत्र कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। और एक बार वो अनुभव कर लिया कि सब कुछ ठीक है, उसके पश्चात आप कोई इच्छा नहीं रहती है, सभी इच्छा एकदम गल जाती है। और उसके बाद अगर जो इच्छा आ रही है तो वो इच्छा इस भाव से, इस भूमिका से, इस चेतना से आती है कि अभी सब कुछ तो मेरा है, अब उसमें से कुछ चाहना हाँ ठीक है।
तो सब कुछ ठीक है से हम आगे बढ़ जाते हैं कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरे लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर अब वो नहीं रहता है कि अब मुझे कुछ पाकर अपने पास स्वयं के पास रखना है। सब कुछ तो मेरा है, जब चाहूं ले लो, जब चाहे छोड़ दो। So again, we all know how Guruji has deciphered the mystery behind all caste chaturvarnyam maya shrishtam, how he deciphers it, the modes of nature, how it impacts us in every way, in what we chose to eat, how we choose to talk, how we choose to different entertainment, how we choose to relate, everything he deciphers it, how it is not based on birth. It is the way nature is. फिर गुरुजी जहां पर हमें ये जो एक चतुर्वर्णीय अस्पृश्य, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन शब्दों का कुछ और अर्थ बताते हैं, इसकी परिभाषा कुछ और हमारे लिए कुछ और थी जो हमने पहले सुनी थी, और एसएसवाई में आने के बाद उसकी परिभाषा कुछ और हो जाती है, जहां पर हमें ये पता चलता है, ये दिखता है कि जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मैं चाहता हूं, वो मैं कौन सी चेतना में हूं। अगर मैं शूद्र चेतना में हूं तो मुझे कैसा दिखता है, तब मैं कैसे जीवन का अनुभव करता हूं। और जब मेरी चेतना आगे बढ़ जाती है, जब मैं ऊपर उठ जाता हूं, अब वही लोग, वही बातें, वही इच्छाएं, वही वस्तुएं, अब मुझे कुछ और अलग अनुभव आती है। Again, I'll bring you back to that Sarvadharman Parityajya, 18th chapter, 66th sloka, where Krishna says, come anyway, I will save you. I'll take care of you. As long as you just come, surrender. No need to worry about anything, any commitment, any dharma. I'm there. So in light of, with sun, is able to clear even the muddiest water. That is how SSY is. As long as you start climbing. And you know, many times you may fall off the ladder. You may fall off the steps. But once you have seen the steps, you know you can climb. You are never again let down. तो वो जो श्लोक है जहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मम परित्यज्य मामकम शरणम, तो सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो गुरुजी भी हमें एसएसवाई में यही देते हैं कि जो है वो है, जो था अभी तक वो था, अब जो है अब शरण में आ जाओ। तो जैसे कि सूर्य के प्रकाश में गंदा से गंदा पानी भी ठीक हो जाता है, गंदी से गंदी जगह भी ठीक हो जाती है, क्योंकि उतनी प्रखरता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, और गुरुजी हमें कहते हैं कि जो है वो है, अब छोड़ दे। एक बार वो छोड़कर आ जाते हैं, तब हमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मुझे कहाँ जाना है। वो पैदान एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। हाँ, संभवतः हम गिर जाते हैं, एक आध बार, दो बार गिर जाते हैं, किंतु फिर उठ जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है, पैदान दिखाई दे रहे हैं, तो हम फिर एक बार उठ खड़े हो जाते हैं। So there are two ways of acquiring knowledge, avidya and vidya. SSY explains that in so many places. The first is the ascending process, in which we utilize our senses, mind and intellect, and explore and discover, just like any learning any skill, or even in yoga practice, if we start climbing through yama, niyama, pranayama, asana, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, forever we will be climbing. We'll be climbing and get stuck somewhere, get distracted somewhere. Here in Bhagavad-Gita, Krishna talks about samadhi, and SSY brings you samadhi to an understanding. It is like you have climbed the mountain. Once you are on top of the mountain,
There may be several paths. There may be a yoga path, a pratyahara path, a dharana path. So many paths may be there, but you know them all. That is what is the state of samadhi. That's the power of Siddha Samadhi Yoga. Guruji has written a book, Yoga Starts from Samadhi, on this. अब आते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान लेने का दो तरीका है या दो प्रकार से होता है। वो है विद्या, एक अविद्या है। एक में जहां पर हम अपनी इंद्रियों को तथा मन को लगाकर कुछ बाहर से ग्रहण करते हैं, और एक है जो हमें अंदर से आता है। तो हर एक का अपना अपना तरीका हो सकता है कहीं पहुंचने का। तो जैसे अष्टांग योग में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें से कौन सा रास्ता, कौन सा अंग कौन पकड़ेगा? कोई भी पकड़ेगा तो वहीं पहुंचना है उसे। तो गुरुजी ने हमें जो दिया है वो दिया है समाधि पाथ, समाधि का रास्ता। गुरुजी ने एक पुस्तक भी लिखी है जहां पर उन्होंने कहा है कि आप समाधि से शुरू करो। लोग कहते हैं कि समाधि अंत में होती, और गुरुजी ने हमें जो दिया है वो समाधि से शुरू करो, मतलब समत्व से शुरू करो। So every day or every time we flip the pages through, we get a new thought, new facet of thought. See, mosquitoes as well as eagles fly in the air. Each does according to its status. Similarly, we can all comprehend Gita as well as SSY to the extent we are willing to give ourselves in. And we can fly high or we can fly low. This is the art of applying wonderful truth for a practical life. एक मच्छर भी आकाश में उड़ता है, तथा एक क्या कहते हैं, ईगल, चिल। तो चिल भी आकाश में उड़ती है। तो हर एक अपनी अपने क्षमता अनुसार उड़ता है और वो अनुभव करता है उस आकाश का। तो वैसे ही हमें, हमारे लिए भी भगवद गीता उपलब्ध है, SSY उपलब्ध है। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता अनुसार उसे ग्रहण करता है, समझता है और फिर अपने जीवन में उतारता है। किंतु हर एक के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध है ही है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो पाता ही है, और जैसे आगे आगे बढ़ता है वैसे वो अगला कुछ ग्रहण करता है और पाता है कि मैं अब और ऊपर उठ रहा हूं, मैं और ज्यादा आकाश में। तो जैसे जैसे मैं और हल्का हो जाता हूं और उड़ता हूं, तो जीवन का और अलग अनुभव होता है। So dharma is the key. In Ramayana time, the war happened far away. The enemy was external force. In Mahabharata, the enemy is within the family. Today's time, the enemy is within us. So SSY as well as Gita are the guiding lights. So we need to manage ourselves, give priority to either the enemy or the dharma. So we have the way, we have the means, and we know it is a joyful path. It is not something to take us away from Ananda. रामायण में हमने ये देखा कि शत्रु घर के बाहर का था, महाभारत शत्रु घर में था। आज की तारीख में जिसे हम कलयुग के हैं, वहां पर शत्रु अंदर ही बैठा है। तो इस अंदर के शत्रु को जानना, पहचानना हमें SSY से होता है। SSY से हम ये जान पाते हैं कि कहां पर मैं अधर्म में जा रहा हूं, कहां पर मुझे धर्म को पकड़ना है। तो राधा मां कह रहे हैं कि वो एक शब्द क्या है जो मैंने पकड़ना है, एक बिंदु क्या है जो मैंने पकड़ना है, वो है धर्म। तो मेरा धर्म
मेरा धर्म क्या है उससे परिचित मैं हो जाता हूँ SSY से। So in Bhagavad Gita, they say it has been divided in 3 sections, 6 chapters each. The whole theme is thou art that. Okay. So Tattvamasi. It explains that. The first 6 chapters are dedicated to thou. Who am I? And that is where our SSY is. Aham Brahmasmi. We realize that. And then the next 6 chapters are that. And the following 6 chapters link the thou and that. It is called, like in a formula, if you create a formula, both sides look different, but they are equal. So each side, when you prove this equals, that side you prove, it equals. Shows designed differently. Same way, Aham Brahmasmin Tattvamasi. So by the time we go from Aham Brahmasmin, we see Tattvamasi by the time we finish BST and go forward. When we practice, we establish in Bhagavad Gita. तो भगवद गीता के 3 भाग है, जहां पर 6 अध्याय है, पहले में, दूसरे में तथा तीसरे में। तो पहले 6 अध्यायों में क्या है, तो जहां पर हम परिचित हो जाते हैं कि मैं कौन हूं। दूसरे 6 अध्यायों में हमें परिचय होता है कि तुम कौन हो, और तीसरे में परिचय होता है कि सब कुछ क्या है। तो वैसे ही SSY जो हमारा बेसिक क्लास होता है, वहां पर हमें परिचय हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूं। जब तक कि मैं अगले AMC में जाता हूं, AMC में पहुंचता हूं, वहां पर मुझे ये अनुभव होता है कि अरे मैं जो हूं सो तू है, तो मैं और तू वही है, मतलब तत्वमसि। और जब तक कि मैं BST में जाता हूं, अगले कार्यक्रम में, तब तक मुझे सब में और सब कुछ में मुझे मैं ही नजर आता हूं। तो ये राधा माँ कह रहे हैं कि जैसे भगवद गीता में 3 भाग है, वैसे ही SSY में भी गुरुजी ने हमें ये सब दिया है, और ये सब अनुभव कराया है, ना कि सिर्फ बोला है। केतन भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? या माँ 8:25 को हमें दीपेश जी को देना पड़ेगा, क्योंकि 8:30 को उनका क्लास शुरू होने वाला है माँ। तो we have finished almost. I'm just saying thank you. Yeah, thank you. It has been a great experience for me to connect, and this is an ocean. I have done only probably 25% of the work, and I'm still exploring, and I'm in awe. I really want to thank that for giving this opportunity. I'm sure out of all this, if we can remember the Fun Club rules, keep that in mind. I would like to conclude that let us give ourselves to life 100%. Let us include everyone. Let us support the world around us 100%. राधा माँ कह रहे हैं कि वो इसका समापन जो है वो कुछ हमें स्मरण कराना चाहते हैं कि पहली बात तो ये पूरा एक समुद्र है, और उसमें से कुछ उन्होंने अभी तक समझा है, जाना है, और वो कह रहे हैं कि वो बड़े कृतज्ञ है कि उन्हें ये यहाँ पर आमंत्रित करके अपने आप को यहाँ पर शेयर करने का एक मौका मिला। और हमें स्मरण कराते हैं हमारा फन क्लब जो है, जो हमने अपने ब्रह्मोपदेश के दिन जो प्रातः हमने खेल खेले थे उसमें, तो उसके जो 3 नियम थे वो हमें स्मरण करा रहे हैं। पहले कि अपना जो है वो 100% दे दो। दूसरा जो है वो दूसरों को
उनका 100% देने के लिए सहायता करो, और तीसरा सबको सम्मिलित करो। तो ये 3 नियम जो थे वो फन क्लब के नहीं, ये हमारे जीवन के हैं। ये हमको वो स्मरण करा रहे हैं और वो धन्यवाद दे रहे हैं सबको। और मैं भी यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, और क्षमा कर देना कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है, रह गया है, तो यू मे प्लीज ऐड ऑन। यस, थैंक यू। Thank you. Yes, Radhama, it thank was you. just wonderful to listen to you. And as I said, I was continuously feeling that I'm interrupting that flow. It would have been really better that, we keep listening. Thank you, Amma. Love you. Thank Love you all. We are blessed to have this. Thank you, ma. So Jai Gurudev Radhama. It Jai- was just fantastic. Thank you. हमें तो ऐसा लगता है कि हम सुनते ही रहे, लेकिन समय की पाबंदी के साथ पूरा करना पड़ता है, लेकिन फिर एक बार आप आ सकते हैं। और समीर का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो राधा माँ मैसेज देना चाहती थी वो पहुंचाया। आज का सत्संग एक ही लफ्ज में किया जा सकता है, जस्ट सुपर्ब। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Sameer. You did a wonderful job. Thank you. समीर जी, थैंक यू। राधामा, थैंक यू। एंड आपको ये मौका नहीं मिला, हमें मौका मिला है आपसे बहुत कुछ जानने का। और यू आर द सीनियर्स, वी आर enlightened and we I are will getting. let Jayaraman add a few lines. Yeah, please. He is the one who I brought know you are Guruji to us. finishing. I don't want to take too much time. Yeah, Samir ji did a fantastic job. The only thing I wanted to say is Radha ji कहती हैं, Raja ji कहती हैं, Raja ji is not कहती हैं, Raja ji is just sharing. Okay, she was not. It is not her words. She is just sharing. So that's very important. Okay. Basically, very quickly, it was indeed a great pleasure that I was able to know Guruji from 1969, and so we went through. There are lots of things. He is in our heart. He's a very special man. Some other day I'll talk about it because it's time is getting there. But it is a real, true blessing that what only he imparted this knowledge and wisdom and energy into us. I think he is guiding us in whatever way he is guiding us, and we are doing whatever we are able to do. So we're very grateful that you all gave this ambience as well as a platform for us to share whatever we are learning. So we'll continue to learn together, and thank you for your support. Jai Gurudev. थैंक यू। अगले रविवार भी सभी बिल्कुल आए। जय गुरुदेव। थैंक यू। Thank you.